Hey guys, I hope you all are doing well, and I'm back with another video where I will be teaching you about the dynamic charts. Dynamic charts, time and again I have told you that in these charts 3 or more years are given and they are line, bar, pie and table. In these type of charts we have to use language of change. And these are the sentence structures which I am going to use there. Introduction will be in passive voice. Overall, despite. In body paragraph 1, I'm going to use WH family, after, although, or an, plus in body paragraph 2, not only but also, and all these sentence structures. So let's start with the line graph. In this, percentage of youngsters is given who are studying in universities in 4 different countries. And these countries are Singapore, Malaysia, Philippines and Thailand. Timing is from 1961 to 2001. So let's get started. I'm gonna write the introduction in passive voice as usual. While writing the introduction of task 1, we have to paraphrase the headline which is given above any chart. And I'll be using the synonym. See the statement, the percentage. I'll use the proportion. 18 to 25-year-old, I'll use youngsters. In universities, I'm gonna say people who are studying in universities. And this is how I will paraphrase my statement. So my introduction is an eye-catching information regarding the proportion of youngsters. Proportion, percentage, synonyms have been used. Pursuing tertiary education. Now, what is the synonym of university education? That is tertiary education. यानी उन बंदों की percentage जो pursue कर रहे थे tertiary education. और अब 4 different countries दे रखा है उसने in 4 different nations. I will use or I will write the names so that will paraphrase the question. It doesn't look like the statement given there. So I'm using names there in Singapore, Malaysia, Philippines and Thailand. On x-axis timing is given, that is 1961 to 2001. So that is almost half century. So that is why I wrote over a period of half century between 1961 and 1971. And now in passive voice I'm going to explain that is demonstrated by the line graph. So while using the synonyms, I have paraphrased the question statement, plus another impact is also added that the question statement is in active voice and I have written that in passive voice. Then comes overall, and in overall I'm gonna write the sentence despite 1. For writing overall, you have to see the trends, that what is happening. If I see this, in Singapore it is increasing, right, with fluctuations almost. In Thailand as well it is increasing, but these two are the highest one in all the given years, right? If we talk about Malaysia and Philippines, then their percentage is also increasing, but that is at a relatively lower pace or lower rate than Singapore and Thailand. These trends will be told in overall by using despite sentence structure. Let's see how. So the overall will be, overall it is axiomatic that despite following fluctuations, देखो सभी fluctuations follow कर रहे हैं, right? So my sentence will be, despite following fluctuations, the strength of young university learners in all 4 nations reflected increasing tendency.
Increasing tendency means increasing pattern in all given years. तो वही चीज़ है ना, सभी इंक्रीज हो रही हैं लेकिन फ्लक्चुएशंस हैं। तो कुछ फ्लक्चुएशंस के बावजूद ये जो स्ट्रेंथ थी ना यंगस्टर्स यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ रहे थे उनकी, इन ऑल 4 नेशंस, उसने शो किया है इंक्रीजिंग पैटर्न। I hope you understood, and now I am going to associate it with however sentence structure. However, more students went to university from Singapore and Thailand as compared to Malaysia and Philippines. And this is how I have completed it in all given years. That's okay. Then comes body paragraph 1. In body paragraph 1, WH family is the first sentence, then after and followed by although. WH family में मैं यूज़ करने वाली हूँ वेयर, और मैं बताने वाली हूँ कि फर्स्ट ईयर देखो 1961 में सबसे हाईएस्ट है आपका थाईलैंड का 25%, है ना, और गिरने के बाद वो बढ़ा है। So the sentence will be, as per the details, in 1961, Thailand was the only country where majority of the students studied in university with just under 1/4 of the total proportion. 1/4 that is given 25%. तो वही मैंने बताया कि थाईलैंड एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे WH फैमिली सेंटेंस डाल के कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडीड इन यूनिवर्सिटी विथ जस्ट अंडर 1/4 ऑफ द टोटल। आगे वो गिरने के बाद बढ़ा है, राइट। देन द सेंटेंस विल बी आफ्टर फॉलिंग स्टडीली। देखो 1961 से 1991 तक वो धीरे से गिर रहा है थाईलैंड में, राइट। तो द सेंटेंस इज आफ्टर फॉलिंग स्टडीली टू 20% इन 1991 या टिल 1991, 91 आता वहाँ पे, आई एम सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। 1991 के बाद देखिए तेजी से बढ़ा है until 2011, है ना। So that will be the sentence. I'm gonna write this percentage increased significantly until 2001, जब ये अपने पीक पॉइंट पर पहुंच गया, when it hit its all time highest proportion of above 40%, है ना, all time highest proportion of above 2/5 of the total. And this is how I have explained and completed the percentage of the Thailand. मैंने उसे पहला बताया कि ना वही एक ऐसी कंट्री थी जो 1961 में जहाँ से ज़्यादा लोग जा रहे थे, प्लस मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ कर लिया आफ्टर प्लस अनटिल एंड व्हेन, कि गिरने के बाद वो तेज़ी से बढ़ा जब वो अपने पीक पॉइंट पर पहुँच गया। So in body paragraph 1, I have told you how to use WH family and after sentence with until and when. I hope the concept is clear to you that how do we make sentence with these two. Next we are going to cover Thailand. Thailand का अगर आप देखो 1961 में वो सेकेंड प्लेस पर है with 15%, लेकिन इसके बाद वो तेज़ी से बढ़ रहा है विथ फ्लक्चुएशंस और सुपरसीड कर रहा है, आगे निकल रहा है सिंगापुर के प्रोपोर्शन से। सो माई सेंटेंस इज इंटरेस्टिंगली, ऑल्दो मलेशिया सिक्योर्ड सेकेंड पोजीशन पे है वो कितने परसेंट के साथ, विद 15% ऑफ इट्स यूथ एक्वायरिंग यानी गेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी डिग्री इन 1961।
1961 में उसकी हाईएस्ट थी, अब वो तेज़ी से बढ़ा है, राइट? तो आई विल राइट an upward trend with drastic rises and falls could be seen in this percentage between 1971 and 2001, and it dominated other nations in this regard. क्योंकि देखो सभी नेशन से आगे है वो, है ना, सभी नेशन से बिल्कुल आगे चला गया है. And it has reached 40%, nearly 40% in 2011, right? So that is why I am writing till the end of the time frame it became 40%, यानी वो 40% बन गया. And that's it. So I have completed body paragraph 1. I have compared Thailand with the percentage of Malaysia, and I used different variety of the sentences. I hope this is clear to you. If we observe the chart next, then we see मलेशिया और फिलीपींस दोनों में ही ग्रेजुअल पेस पे ये जो परसेंटेज थी वो बढ़ रही है. एंड यस, वी आर गोइंग टू मेक द सेंटेंस विद नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो. So we are writing, moving ahead, not only Malaysian but also Philippine students demonstrated rising trend at a steady pace. Rising trend मतलब increasing pattern और steady pace यानी gradual pace पर. अब हम दोनों की परसेंटेजेस को अलग अलग एक्सप्लेन करने वाले हैं कि मलेशिया की 2% से 15% पर बढ़ी है. तो द सेंटेंस इज मोर स्पेसिफिकली फॉर्मर हैड राइजन. फॉर्मर यानी पहले मैंने मलेशियन स्टूडेंट्स की बात करी थी, तो फॉर्मर हैड राइजन फ्रॉम अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ 2% इन 1961 टू 15% इन 1991, फॉलोड बाय अ स्टेगनेंट फेज. उसके बाद देखो वो सेम रहा है, तो फॉलोड बाय अ स्टेगनेंट फेज ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades, and this is how you are done with the first one. अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो वो कांस्टेंट है 7% पर 1961 से लेकर 1971 तक. तो मैं सेंटेंस बनाने वाली हूँ देयर वॉज करके. देयर वॉज अ कांस्टेंट लेवल एट ऑलमोस्ट 7% बिटवीन 1961 एंड 1971. आगे देखिए, इनका जो फ्रैक्शन है वो डबल हो गया था टिल द एंड तक वो डबल हो गया, 7 से ऑलमोस्ट 15% पहुंच गया है. सो द सेंटेंस इज देयर फ्रैक्शन डबल्ड बाय द एंड ऑफ द टाइम स्पैन, यानी एंड तक वो ऑलमोस्ट डबल हो गया. एंड दैट्स इट. एंड दिस इज हाउ वी आर डन विद द लाइन ग्राफ. And we have used almost all the sentences which I showed you. Next, यही sentence structures हम use करने वाले हैं अब table of content. This is your table of content जो कि show कर रहा है production of cocoa beans in 6 regions between 1992 and 1998. Different places दे रखे हैं और timing दे रखी है. जब timing दे रखी है तो of course I will use डायनामिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. देखो फर्स्ट का इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज तो फ्लक्चुएशंस है. अफ्रीका का बढ़ के गिरा. एशिया या एजा की अगर हम बात करें तो वो बढ़ रहा है, और यस बढ़ रहा है. ओशेनिया में क्या करने वाले, ओशेनिया में भी ये बढ़ रहा है. इन साउथ अमेरिका इट इज़ फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीज्ड. You're right. And in England, what happened? In England, बढ़े गिरे and all, fluctuating trend. So yes, this is the information. I hope you observed the table of content. एजा और ये आपके साउथ अमेरिका जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है ना. सो लेट्स स्टार्ट नाउ.
So as usual, my introduction is in passive voice. I am writing an eye-catching information regarding the output of cocoa beans in 6 global areas. Global areas मैं regions की जगह synonym use कर लिए हैं. From 1992 to 1998 is indicated by the table of content. And I used only the synonym of production and the global region. Rest of the information is paraphrased by using the passive voice. That's it. If we look the chart carefully, we can see in Asia and Australia the percentage याद रह गई यार, the amount increased dramatically, तेजी से बढ़ी है ना, और बाकी सब में देखो बढ़ रही है, गिर रही है and all that. So on the behalf of this information, I'm writing overall by using the despite sentence structure. Overall, despite rising dramatically in Asia and Oceania, कि एशिया और ओशनिया में तेज़ी से बढ़ने के बावजूद this amount fluctuated in rest of the areas, या फिर in rest parts of the world, बाकी सब में ये fluctuate हुआ है, बढ़ के गिरा, गिर के बढ़ा and all that. That's it. Now I'm going to write the timing in all years or in all given year. That is up to you. लेकिन हमने ये भी देखा कि एशिया और साउथ अमेरिका सबसे बड़े लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स थे. तो yes, I am writing that information by using although. Although Asia and South America were the largest producers than other areas. And we are done with introduction and overall. अगर हम 1992 में देखें टेबल में, तो साउथ अमेरिका सबसे ज़्यादा टन्स प्रोड्यूस कर पा रहा है, राइट. सो मैंने वही पिकअप किया है जो सबसे हाईएस्ट है, और मैं ओनली वाला सेंटेंस बनाने वाली हूँ WH फैमिली करके. सो हर चार्ट में आपको यही देखना है कि किसकी परसेंटेज फर्स्ट ईयर में या किसका डेटा फर्स्ट ईयर में ज़्यादा है, ताकि आप ये सेंटेंस बना सको WH फैमिली वाला. So the sentence will look like, in 1992, South America was the only region where whopping मतलब highest 1,43,000 tons of cocoa beans were grown, right? कि साउथ अमेरिका ही एक ऐसा पार्ट था जहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट ग्रो किया गया था. And that's it. अगर आप उसको आगे देखो तो उसके साथ क्या हुआ है कि वो ना फॉल हुआ है. कहाँ तक हुआ है? 1996 तक, है ना. तो सेंटेंस विल बी, आफ्टर फॉलिंग ग्रेजुअली टू 1,12,700 टन्स टिल 1996. आफ्टर वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर ले आई मैंने पिछली बार भी यूज़ किया था लाइन ग्राफ में, कि 1,12,700 टन्स तक गिरने के बाद ये अमाउंट देखो दोबारा से बढ़ा है 1998 में. तो द सेंटेंस इज, दिस अमाउंट पिक्ड अप अगेन, दोबारा बढ़ा, इन ऑर्डर टू टच, ताकि ये टच कर सके 3,89,000 टन्स इन 1998. मैं आगे ये भी लिख सकती थी कि जो इसका सबसे हाईएस्ट प्रोपोर्शन था, विच वॉज इट्स जिजेंटिक प्रोपोर्शन. दैट्स इट. आगे हम बात करने वाले हैं एशिया की. सेंटेंस देखिए. अच्छा देखो, एशिया सेकंड पोजीशन पर है 1992 में, लेकिन आगे ये साउथ अमेरिका से आगे निकल गया है, जैसे पिछली बार लाइन ग्राफ में भी हुआ था किसी ट्रेंड के साथ. तो वही चीज़ हम कवर अप करने वाले हैं बाय यूजिंग ऑल्दो सेंटेंस स्ट्रक्चर. एंड द सेंटेंस इज, इंटरेस्टिंगली, although Asia secured second position in 1992 with producing 1,19,000 tons, it surpassed South America by rocketing up to 4,36,000 in 1998. सो हमने बॉडी पैराग्राफ 1 में अब तक इंक्रीजिंग पैटर्न डिस्कस कर लिए हैं.
और अगर हम चार्ट में देखें तो क्या चीज़ हो रखी है, ओशेनिया में भी ये परसेंटेज बढ़ा है. सो द सेंटेंस विल बी अ सिंपल वन, क्योंकि राइटिंग हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर या कंपाउंड से बनी नहीं होती. इट कंप्राइजेज सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स टू. तो इसीलिए मैं ओशेनिया का एक सिंपल से सेंटेंस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करने वाली हूँ. एंड यस, by using similarly connector, this figure in Oceania had risen from 40,000 in 1992 to 76,890 in 1998, making it the third largest producer. ये third largest producer था last year में. And yes, we are done with body paragraph 1 and 3 trends. Now look at the table carefully. हम देख रहे हैं अफ्रीका और इंग्लैंड में ऑपोजिट पैटर्न है ना, क्योंकि एक का बढ़ने के बाद गिरा है और दूसरे का गिरने के बाद बढ़ा है. एंड यस, वी आर समराइजिंग द इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग एन सेंटेंस स्ट्रक्चर. सो लेट्स सी हाउ. Sentences and opposite tendency could be seen in Africa and England. ऑपोजिट टेंडेंसी है और एंड से सेंटेंस स्ट्रक्चर बन गया. अफ्रीका की एक्सप्लेन करते हैं. मोर स्पेसिफिकली फार्मर्स यील्ड यानी प्रोडक्शन. पहले वाले का यानी मैंने पहले किसकी बात करी थी, अफ्रीका की. तो फार्मर्स यील्ड फर्स्टली सर्च्ड एट अ ड्रामेटिक रेट. ड्रामेटिक रेट पर बढ़ा. सर्च इज द सिनोनिम ऑफ बढ़ना. तो फार्मर्स आउटपुट इंक्रीज्ड एट अ ड्रामेटिक रेट फ्रॉम 29,000 टू 1,90,000. और टाइमिंग क्या थी, बिटवीन 1992 एंड 1996. उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, उसके बाद एक फॉल आई है, फॉलोड बाय एन अब्रप्ट फॉल ऑफ. फॉल देख लेते हैं कितने की है. एन अब्रप्ट फॉल ऑफ ऑलमोस्ट नहीं है 94,000 इन द लास्ट ईयर और इन 1998. नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंग्लैंड की. सेंटेंस बनाएंगे हम देयर वॉज से. तो द सेंटेंस विल बी whereas in case of later यानी दूसरे वाले के केस में there was a decline of 13,000 during first 4 years. फर्स्ट 4 years तक 13,000 की डिक्लाइन हुई है, डिक्रीज हुआ है, राइट. along with a rise to 49,000 in the last year. and that's it. तो अब हमारा सिर्फ एक ही ट्रेंड रह गया है, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका. तो रादर देन एक्सप्लेनिंग दैट इन डिटेल, मैं ये बताने वाली हूँ कि वो ना इस रेंज से इस रेंज के बीच में ही रहा है ना. देखो 25,000 है सबसे कम और 46,000 है सबसे ज़्यादा, इसी के बीच रहा है ना हर एक ईयर्स में, राइट. तो द सेंटेंस विल बी लास्टली इन नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका इट होवर्ड यानी आसपास मंडराया. इट होवर्ड बिटवीन 25,000 and 46,000 during the given year. यानी सभी ईयर्स में ये इन दो डेटा के बीच में रहा. So we are done with table of content as well by using the sentence structure which we used in line graph. Thirdly, we are going to describe a bar graph जिसमें टाइमिंग दे रखी है 1998 से लेकर 2004 तक और परसेंटेजेस है पीपल की जो कि डेटा सर्व करते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस. इंट्रोडक्शन, आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग द हेडिंग स्टेटमेंट. अ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द चेंजेस इन द प्लेसेस वेयर इंडिविजुअल्स एक्सेस्ड इंटरनेट is depicted by the bar graph during the time period from 1998 to 2004. अगर हम ओवरऑल की बात करें तो देखो घर पर सभी ईयर्स में परसेंटेजेस ज़्यादा है उन लोगों की जो नेट सर्व करते हैं.
So that is why the sentence is overall, majority of the people surfed the internet at home in all given years. That's it. Now comes body paragraph 1. If we look at the chart, we can see in 1998, the percentage of the people surfing internet was highest, है ना, at home. That was 55. And that is why I'm going to make sentence with WH family there. I'm gonna write, as is evident from the schematic, home was the only place which show gigantic fraction of net users in 1998 with whopping 55%. 55% है राइट उनका फर्स्ट ईयर में सबसे हाईएस्ट. आपको अभी तक ये पता चल ही गया होगा कि मैं पिकअप करती हूँ वो वाला जो सबसे हाईएस्ट हो, so that I can make the sentence structure with WH family. ऐसे भी हो सकता था, home was the only place where gigantic fraction of the people surfed internet with whopping 55%. आगे देखो कि ना ये 48% तक 2000 में गिरा, लेकिन फिर दोबारा से बढ़ गया और इस सब के बावजूद ये सबसे हाईएस्ट है सभी ईयर्स में. तो द सेंटेंस इज, ऑल्दो इट वेंट डाउन टू नियरली 48% इन 2000. देखो नीचे गिरा है ना 48% पर, एंड पिक्ड अप अगेन टू 55% बाय द एंडिंग ईयर. देखो गिरने के बाद यह बढ़ा है, तो द सेंटेंस इज, ऑल्दो इट वेंट डाउन टू नियरली 48% in 2000 and picked up again to 55% by the ending year, it remained highest among all in all years. I hope the sentence is clear. अब सेकंड पोजीशन पर कौन है आपको पता चल ही गया होगा कि मैं सेकंड पोजीशन वाला उठाती हूँ. तो सेकंड पोजीशन पर है आपका वर्क. वेरी फाइन. तो मेरा सेंटेंस जाने वाला है, इंटरेस्टिंगली वर्क वॉज द सेकेंड मोस्ट कॉमन प्लेस फॉर यूजिंग इंटरनेट with almost 27% in 1998 and 2000. है ना? Sentence is clear? Now I'm going to make the sentence with a reduction of 10% could be seen in the proportion of the people who spent their time in using internet at work till 2004. And that's it. Body paragraph 1 is done. I am skipping body paragraph 2 of table of content so that you can practice yourself. If you have any doubt while making the sentence structures in body paragraph 2, please comment and I will be answering you. Let's deal with pie charts now. वही 3 और 3+ ईयर्स दे रखे होंगे, तो 1984 से लेकर 2004 तक आपको डेटा दे रखा है. उन लोगों की परसेंटेज है तो जो डिफरेंट टाइप के कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं. एंड दैट्स इट. सो वी आर गोइंग टू टेल द चेंजेस ओवर हियर. First of all, introduction, I am going to just paraphrase the heading statement as I did in earlier charts. The information relating with the distinct sort of courses which were preferred by learners between 1984 and 2004 is shown by 3 pie charts. यानी डिफरेंट टाइप के कोर्सेज के बारे में है ना जो लोगों के द्वारा प्रेफर किए गए हैं, और टाइमिंग इज दिस वन एंड दैट वन. So now your introduction is done. Now comes overall. ओवरऑल में क्या करने वाले हो आप? मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करने वाली हूँ हाउएवर वाला, कि एक का बढ़ा होगा और दूसरों की परसेंटेज गिरी होगी एंड दैट्स इट. सो किसकी बढ़ी है? मिक्स मीडिया की, राइट? आप ध्यान से देखो, मिक्स्ड मीडिया की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ी है लेकिन गिरी है बाकी सब के केस में. So the sentence will be, overall, undoubtedly, popularity of mixed media rose with the passage of time. However, traffic in the early morning, however, it decreased in case of the rest.
And yes, your overall is done now. Now comes body paragraph 1. In body paragraph 1, again I'm going to pick up that one which is most popular. That's very fine. Or in the first year. In 1984, face-to-face courses were highly popular with 2/3 of the students learning them. Almost 66% पढ़ रहे हैं. That's it. In the later years, it had reduced by 27%. ख़त्म कर दिया मैंने कि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे और 25% से रिड्यूस हो गए हैं. That's it. अब ऑपोजिट. कॉन्ट्रास्टिंगली अब पहले वाले का रिड्यूस हुआ है तो अब के वाले का इंक्रीज होगा. तो मेरा सेंटेंस है 13% pupils studied mixed media courses and their proportion increased gradually. I'm sorry, it is wrongly written over here. Until 2004 when it hit its peak level of 35%. यहाँ reduce लिखा है. I'm sorry for that. That's okay. Moreover, although correspondence courses secured second position in 1984 and 1994. देखो second position है as 20% were enrolled in them. 20% बंदे उनमें हैं in both year. A reduction of 5% could be seen in the ending year in their strength. And this is how body paragraph 1 is done. Mismanagement हो गया क्योंकि एक ही trend रह गया है. Okay. Proceeding further, there were 11% pupils taking admission in online courses in 1994. Again, online courses is missed there, which saw a decline of merely 1% in 2004. And this is how we explain the dynamic charts by using different sentence structures. Thank you for watching and please keep supporting. Have a nice time.